Uh, So now after login with an existing vendor, uh, this is the landing page wherein we are showing the dashboard. Here you will see the count of the application which are available at a different stages. Okay, so you can just apply the filter over here as per whatever the count you want to see, and this count will be updated accordingly. The next we have is the interested consumer list. Uh, Here basically like all the consumer who has shown interest in you and want to discuss further about their installation at their on their home. So this those consumer will click on the show interest button in their consumer profile, and those interests you will see over here. Here we are also showing like since when this request is pending at your end. So like this was 20 days ago, then 14 days ago, and these two are have shown interest today. Uh, Once you have received this information, then we are showing the mobile number and the email of that particular consumer. You may directly contact them using these contact details. Then you have an option to mark them as whether the consumer has interest in the installation of the rooftop, or the consumer is not picking up the phone, or you have rejected its request. Accordingly, whenever you select over here, you'll get one confirmation pop-up. Once you select yes over it, then in the completed tab, uh, you will see this entry over here and the status that you have selected. So again, if I select consumer has not picked up the phone, so again here we have the status consumer has not picked up the phone. अगेन इन हिंदी, अ, जब आप एक अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से लॉगिन करोगे तो आपको ये लैंडिंग पेज मिलेगा। यहाँ पे आप डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पे आपको काउंट मिलेंगे जो एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है। यहाँ पे आप अपना फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्कॉम सिलेक्ट कर सकते हो। जो स्टेट में आप ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, सिर्फ़ वही स्टेट दिखाई देंगे यहाँ पे आपको, और डिस्ट्रिक्ट भी वही दिखाई देंगे जो आपने ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद इंटरेस्टेड कंज्यूमर का पेज है। इस पेज पे आपको वो सारे कंज्यूमर की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने आपको इंटरेस्ट शो किया है। तो इस कंज्यूमर का आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर उस कंज्यूमर ने मेंशन किया है ईमेल आईडी, तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अ, आप इस ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा उसको कांटेक्ट कर सकते हो। अ, आपने एक बार इससे बात कर लिया है तो अकॉर्डिंगली आप इस लिस्ट से, पेंडिंग लिस्ट से, इस कंज्यूमर को हटाने के लिए आपको एक्शन मेन्यू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि अगर कंज्यूमर ने बात हुई और कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, या कंज्यूमर ने फ़ोन नहीं उठाया, या आपने इसका रिक्वेस्ट जो था वो रिजेक्ट कर दिया है। आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अ, अभी मैंने रिक्वेस्ट रिजेक्टेड सिलेक्ट किया है, तो वो जो एंट्री है वो यहाँ पे कंप्लीटेड सेक्शन में चली जाएगी, और यहाँ पे आपको स्टेटस समझ में आ जाएगा कि आपको इस कंज्यूमर ने कांटेक्ट किया था, और फिर आपने इस पे इंटरेस्ट किया है, इसने इस कंज्यूमर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, और ये वाला कंज्यूमर से मेरी बात हुई लेकिन रिजेक्ट हो गया। Okay, the next section we have is the consumer request list. On this page, consumer, we have given the provision to the consumer where consumer will select you as a vendor to fill up the application form on his behalf. Okay, and uh, all those requests will be shown over here under the pending request. So the date on which is like here, as well we are showing on how many days ago that consumer has requested. Uh, Again we are showing the same contact details of the consumer, and first you'll connect with them directly through the mobile number or the email, and then you will select whether to accept or to reject.
If you select accept, then that particular application will move under the accepted request tab over here, and you can start the application. Similarly, if you don't want to accept this, you may only click on the reject, and this application will move directly under the reject section. Under the accept section, I'll first accept this. Okay. Under this section, when you are uh, you have to start filling up the application, then you merely have to click on this application start application button, and this pop-up will pop up. Okay. तो जो हमारा अगला पेज है वो है कंज्यूमर रिक्वेस्ट लिस्ट। इस पेज पे आपको अ, वो सारे कंज्यूमर की डिटेल्स मिलेंगी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है आपको एज अ वेंडर फॉर्म। एक्शन मेन्यू है। इस एक्शन मेन्यू में आप किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। जो भी आप मेन्यू सिलेक्ट करोगे वो इस पेज टैब में जाएगा। जो भी एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड टैब में जाएगा, और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट रिजेक्टेड टैब में जाएगा। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अभी आपको इस कंज्यूमर का फॉर्म भरना है। तो उस फॉर्म भरने के लिए आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है, और ये एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन उनका भरना स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट जो किया है इसके अगेंस्ट जितने भी डिस्कॉम्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी मैं नांदेड़ सिलेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये है। यहाँ पे मैं नागपुर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर ऐड अप करूँगा। तो यहाँ पे अभी मैंने एक कंज्यूमर नंबर ऐड किया है, और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं अगले पेज पे चला जाऊँगा। So when you have started filling up the application, you merely have to click on the start application button, and this pop-up will open. On this pop-up, you have to select the state and the district. Uh, the list of the discount will be displayed. The list of the discount will be displayed based on the selected district, and you have to enter the consumer account number which the consumer has shared with you when you have contacted them. Then you have to click on the fetch details button, and after clicking on this, you'll have this details of the consumer available with you. And once everything is done, just click on the next button. On this page, you have to select fill up the entire form, and you have to select the gender, and then the type of the location. This is mandatory whether it's a rural or urban. So if I'm selected as urban, then we have to enter the local body name. If I'm selecting this as a rural, then I have to enter the development block or the taluka or the village panchayat. So in case of rural there are two mandatory things, and in case of urban there is one. In the second panel, you see all the details that are fetched directly from the Discom API. And once all these details are available, these are not edited anymore. Then you have to select the category over here, whether the consumer is applying under the residential category or the residential welfare association category. So if he has selected residential welfare association, that is RWA, then the number he has to enter the number of the houses over here. Then you have to enter the proposed
solar plant capacity. Here we are showing the sanction load which we received from the DISCOM API, then the existing solar capacity over here, and I'm selecting as 1.5 kilowatt first, say. Okay, and then you have to click on this pick from map button, wherein you have to select the latitude and the longitude. So for that, I'll click on this pick from map. Now this district is fenced, like you have to now select uh, the location within this highlighted district only. You cannot click outside the district. As soon as you click on it, you'll get one pop-up that you have clicked outside the highlighted district. So select any location within here. And then you can upload the documents over here, and and then the document you have to upload the electricity bill from the last 6 months, and finally click on the send to consumer button. सो जब आपने ये पेज पे आए हो, इसके पहले वाले पॉपअप पे नेक्स्ट के क्लिक पे, तो आपको यहाँ पे जेंडर एंटर करना है और टाइप ऑफ लोकेशन सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ लोकेशन में आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, रूरल और अर्बन। अगर आपने अर्बन सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी नेम सिलेक्ट करना है, और अगर आपने यहाँ पे रूरल सिलेक्ट किया है तो आपको डेवलपमेंट ब्लॉक तालुका और विलेज पंचायत को सिलेक्ट करना है। फिर ये पैनल आएगा। यहाँ पे हमने सारे जो डिस्कॉम से हमको डिटेल्स मिले हैं वो सब शो किए हैं, और ये एडिटेबल नहीं है। अ, जो थर्ड पैनल है, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अगर वो रेसिडेंशियल है या आरडब्ल्यूए है। अगर आरडब्ल्यूए सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ द हाउसेस यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर आपको यहाँ पे एक प्रपोज सोलर प्लांट कैपेसिटी डालना है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो कितने कैपेसिटी का है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको पिक फ्रॉम मैप के से आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है। तो जब आप पिक फ्रॉम मैप पे क्लिक करोगे तो ये एक भारत मैप लोड होगा, और ये एक डिस्ट्रिक्ट जो नागपुर हमने सिलेक्ट किया है उसी में फेंसिंग लगाई हुई है, तो आप इसके बाहर कहीं पे सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जब करोगे तो आपको ये पॉपअप आएगा कि आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं, तो जो भी आपका सिलेक्शन है ये सिर्फ हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। अगर आप एक लोकेशन को सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप सिलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपने सिलेक्टेड लोकेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे एंटर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड कर सकते हो जो कि पिछले 6 महीने के अंदर का होगा। ओके, और फाइनली आपको जब ये फॉर्म आपके एंड से सबमिट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पे सेंड टू कंज्यूमर बटन पे क्लिक करना है। तो हमने ये वाला फॉर्म भरा, तो जो सेंड टू कंज्यूमर किए, तो फिर यहाँ पे जो पहले स्टार्ट एप्लीकेशन था वो अभी कंफर्मेशन पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब हम इस कंज्यूमर के लॉगिन करेंगे नंबर से, और अ, जो आपने कंज्यूमर को फॉर्म सेंड किया है वो कंज्यूमर को रिव्यू करना है पूरा फॉर्म, और उसको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करता हूँ।
तो कंज्यूमर माई एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे व्यू बटन पे जब कंज्यूमर क्लिक करेगा तो उसको ये पूरा फॉर्म जैसा आपने भरा था वो पूरा दिखाई देगा। और कंज्यूमर ये फॉर्म को एडिट नहीं कर सकता, ये सिर्फ कंज्यूमर व्यू कर सकता है। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगा कि किसी पॉइंट पे कि ये जो डिटेल्स है ये उसमें कुछ गलत है या करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे सेंड बैक टू वेंडर पे क्लिक करेगा और ये फॉर्म दोबारा आपके साइड ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। अगर कंज्यूमर को लगता है कि ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो सही है, तो उसको ये कंज्यूमर ने यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा। तो सबमिट के क्लिक पे ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और अ, आप इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर अपलोडिंग द एग्रीमेंट। सो आफ्टर एक्सेप्ट आई एम right now logged in with the consumer for which the vendor has filled up the form. So under the my application on the consumer home page, uh, I clicked on this view button and this form will open up. On this form, the entire form is non-editable for the consumer. He can just view the form and its corresponding details. At any point of time, if the consumer feels that the entered details are incorrect, then he can surely send this form back to the vendor by clicking on this send back to vendor. So when he clicks on it, then he'll get one remark column where he can mention that what else, what the things were wrongly mentioned in this form. Accordingly, vendor can correct them. If the consumer finds the entire form is correctly filled, then he'll click on this checkbox, and this is basically an acknowledgement where he is uh, just telling that he has verified all the details, and he'll click on the submit button. So once the form is submitted successfully from the consumer, then in this stage, the vendor is also automatically selected, like the vendor who has filled up the form, uh, that particular vendor himself is selected over here. So you can see that the vendor selection is completed and the selection name. All right. So I'll log in with new consumer now. Now we'll fill up one new form via consumer. So for whenever consumer log in, he has to complete the profile, and for the new application, he'll click on the my application, and here if there are no existing application, we'll click on the background button over here. This apply for solar rooftop installation, and on click of this, will show the same pop-up as in the vendor. I clicked on the fetch details and now clicking on the next. Now this is the process where consumer is filling up the form and then he'll select you as a vendor. So अब अभी जो हमने देखा तो अभी हमने कंज्यूमर से एक लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद कंज्यूमर अपना प्रोफाइल फिलअप करते हैं और फिर माई एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक पॉपअप आता है जो कि वैसा ही है जो हमने वेंडर में देखा था। वहाँ पे सब मैंने डिटेल्स डाला है और यहाँ पे इस पेज पे आया हूँ। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे एक कंज्यूमर फॉर्म खुद से फिलअप करता है और फिलअप होने के बाद वो एक वेंडर को सिलेक्ट करेगा।
अ, जब कंज्यूमर फॉर्म फिलअप करता है तो ये जो पिक फ्रॉम मैप का है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जब वेंडर भरता है फॉर्म तो उसके लिए मैंडेटरी है। एक चीज़ है बताना, जो ये गिव अप सब्सिडी का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके क्लिक के ऊपर एक पॉपअप आता है जहाँ पे लिखा है कि अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो ये आपको ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक पे आपको ये पॉपअप आएगा जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि सब्सिडी कितना है और कितना आपको अकाउंट में कितना जब मिल सकता है। अगर आप ये सब्सिडी नहीं लेना चाहते, तो आपको ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है। हम सबमिट करेंगे। फिलअप किया और सबमिट भी कर दिया। अब कंज्यूमर करेगा। So once the consumer has submitted the form successfully from his end, then under the actions on the application section, he will see an option to select the vendor. So for then he'll click over here, and this page will open up where the entire list of the vendors are shown, and he'll search for this particular vendor and then click on the select vendor. So after clicking on the select vendor, we are showing this pop-up where he's sure with the vendor selection, and if he's clicking on the yes, then that vendor is successfully selected. Now we'll go back to the vendor login again. Okay. So the forms which are already filled up by the consumer, and then he has selected you as a vendor, those forms will be displayed under the vendor consent page. Here you can see the details such as the application number, the discom name, the consumer number, the name of the consumer as per the discom, then the contact details of that particular consumer and the proposed capacity. These details are we are showing over here. Uh, on click of the expand button, you'll see the additional details of that particular consumer. So you can either accept it or reject it. If you have to reject it, then entering the remark is very mandatory over here. So you fill up the remark over here and then you click on the reject, then this will move into the reject. uh, और वेंडर कंसेंट में मिलेगा और ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाएगा। यहाँ पे आपको वेंडर कंसेंट में मिलेगा और ये आपको यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखाई देगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट में जब आपको ये फॉर्म दिखाई देगा तो यहाँ पे ये एक्शन में एडिशनल डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका फॉर्म माई एप्लीकेशन सेक्शन में चला जाएगा, और अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो ये यहाँ पे बाजू में जो रिजेक्टेड टैब है यहाँ पे चला जाएगा। तो जब अगर आपको रिजेक्ट करना है तो इसका मैंडेटरी है कमेंट डालना। तो ही ये रिजेक्ट बटन एनेबल होता है। ठीक है, अभी मैं एक इसको एक्सेप्ट करता हूँ। So once that is successfully accepted, then we show this message over here, and then that form is moved under my application. Okay, so on this my application page, you will see list of all the application that has been accepted by you, or those application which are filled up by you.
Uh, then here,